And again we are continuing our third chapter that we have started. Its name is Journey to the End of the Earth and it is written by Tishani Doshi. I explain about the first part, that is the part of the history and how the writer started her journey, what he felt about the Antarctica continent. Very nicely I explained in the previous part. Now we move towards second part, that is human impact. So what the writer is saying here, human civilizations have been around for the paltry to 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, megacities. The rapid increase of human population has left us battling with our species for limited resources, and the unmitigated burning of the fossil fuel was now created a blanket of the carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. So, human impact. Here the writer is starting about the human impact. So, the writer is saying here that students. So the writer is saying that human civilization has started from 12,000 years ago. So not much time we have completed over the earth, and in a short amount of time we managed to create quite ruckus. Means what? Ruckus means what? Commotion. We have started commotion of the things, etching our dominance. Etching means what? We are going to start dominance over the nature. Okay, we have drawn all our attention towards the dominance of over the nature, and because of this, why? How we have dominated the nature? By building village, by making, not building, villages, towns, cities, mega cities, and we have started to build the concrete forest only, grey forest. We have started to make only the grey forest. We all have forgotten about the green forest that our earth has given to us. Okay, so the writer is saying that because of our selfish motives, we are started to burn the fossil fuels. Unmitigated means pure. We have started to burn all the fossil fuels, and now we have created we can say that challenge for our lives only. Because the CO2 is increasing day by day. The nature, the CO2 has just built one shield over the earth, and because of CO2, the CO2 is increasing. It causes global temperature, increment in the global temperature. You know that CO2 is a heavy gas. What is the, as you maybe the science students may know this, you know that gases has the quality to rise upward. Yes? Yes. Then but CO2 is such a type of gas, because of its heaviness, it remains over a particular height only. It can't cross further that height. If we are planting more types of trees, then the trees are, during the photosynthesis, the trees are absorbing this CO2 and releasing O2, that is oxygen. So, oxygen is beneficial for us, and parallelly nitrogen is helping for getting the oxygen. But because of the grey forest means concrete structures, as we have started to build more and more because of the population increase, the green forest is remaining less, and this impacts the increase in the CO2 level, and it causes increase in the global temperature. And because of this, you have seen that seasonal changes you can find. Seasonal changes. Now see, just take the example. Now rainy season is going on. Okay, but in Ahmedabad, if we are talking about Ahmedabad, we are not getting the proper rain. Okay, and other places the floods are coming. Okay, enough sufficient we can say rain is there, but only in this Ahmedabad and other mega cities they are not getting the rain in proper way. Why? Because of the CO2 and global temperature or increment in the temperature, global warming. These are all the bad impacts we all are living. That is why I said that today is a challenge, risk for our lives. We can't say about tomorrow. Why? Because today only our life is not safe. And
again for adding our problem, Corona come. Okay, Corona has increased our lot of difficulties. So the writer is saying that because of this our human activities, as we going to start to dominate the nature, and nature has no voice, but nature can give the answer through this seasonal change, global warming. These all are the answers given by the nature. So from that onwards, we have started one new concept, that is sustainable development. Sustainable development means what? Without harming the nature, we can continue our development. But this is very short definition of sustainable development. Got it? Sustainable development means we can, especially it is for the developing nations like India, we can continue our development. The developed nations or the government, world government, that is UN, they are giving loans to the developing nation. Okay, they can give the, we can say that bonus points to developing nation if they are providing or they are following the sustainable development. Sustainable development means without harming the nature, we can continue our development. So for this we have to take care about the geological points of the earth, living creatures that all living over this earth, because you know that these all the creatures are divided into different chain. If we broke one of the chain, then we have to suffer the problems, side effects, उसके जो भी side effects है, we have to suffer from this. यही राइटर ने यहाँ पे बोला हुआ है. आगे क्या बोल रहा है देखो. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, maybe not. Here, the author has explained some possibilities. If we have continued to dominance over the nature, these are the bad impacts that we have to face with it. So what are these impacts? So the writer is saying that, will the West Antarctic ice melt entirely? If ice melt, 90% of the earth water is in the form of ice. If ice melts, then the whole earth will be in the water only. Second side effect, will the Gulf Stream ocean current disrupted? And will it be the end of the world as we know? Maybe or may not. These all are the possibilities about the end of the world. So either way, Antarctica is a crucial element in this debate, and not just because it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layer of ice. You know carbon dating method? Have you heard about carbon dating method? It is the method that from this method we come to know about the buried elements whatever inside the earth. We can define their age. If study carbon dating method shows the study or age. If you want to know the age of the buried items, we can get the age by carbon dating method. So the writer is here saying that Antarctica continent is the best element for it, because so many here the writer is saying that so many carbon records are trapped inside these continents Antarctica, and that is why if you want to know the Earth's geological past, present and future, only this continent is very, very, very important. And that is why because no human habitation is there, no human population is residing here, and because of this we get to know about the methods whatever we are following here. Students, now the writer is saying that students on ice, the program I was working with on the Shokal Sky aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which all help them foster a new understanding and respect for our planet. It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of partying celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. With students on ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at the age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. Very nice sentence the writer has given. The writer is saying that one Canadian scientist, his name is Geoff Green. He was tired of inviting some celebrities and some rich people to seek for the future of the
human generation. Now he wanted to start the business, not business, project, that we have to take the future generation to the Antarctica continent. Future generation means you, all students. If we want to visit all these students the Antarctica continent, they come to know its bad impact. They come to know what the means they are interested in studying this continent, and the main thing is that not just they study, they will be act means वो सिर्फ स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ के छोड़ नहीं देंगे, कि उनको पता है कि दीज आर यू ऑल आर द फ्यूचर जनरेशन। और तुम लोगों को अगर ऐसी जगहों पे पिकनिक लेके जाएंगे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ग्रीन जियोफ का कहना है कि ऐसी जगहों पे हम लोगों को बच्चों को लेके जाना चाहिए, बिकॉज दे ऑल आर द फ्यूचर जनरेशंस, एंड वंस दे नो दैट व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स of this continent if we are harming it, then they can study and give the action, will take some actions। वो क्या करेंगे? एक्ट करेंगे, एक्शंस, कि हमें सिर्फ स्टडी करके छोड़ नहीं देना है, हमें ये अर्थ को बचाने के लिए जो भी एक्शन लेने पड़े वो लेने के लिए फ्यूचर जनरेशन रेडी रहेगी। कब? when they know the reality, when they are familiar with the reality, isn't it guys? yes, absolutely। अगर तुम लोग हो, सपोज तुम लोगों को अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में हम लोग लेके गए, ओके, अभी मैं तो कुछ नहीं कर सकती, बट यू आर द फ्यूचर जनरेशन। तुम लोग वो कॉन्टिनेंट देखोगे, अर्थ के जियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में स्टडी करोगे, अगर तब तुमको पता चलता है कि हमारी अर्थ जो है वो खतरे में है, तुम लोग डेफिनेटली विल ट्राई, तुम लोग जो है वो कोशिश करोगे ही करोगे। इसीलिए यहाँ पे राइटर ने बोला है कि द जॉफ ग्रीन decided to take the young students to the continent, because they not just watch or observe the continent, but they can absorb, learn, study the continent, and they will do some action, okay? So that is the most important point the author has explained here. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. Actually this means no one is ready to be successful in this program, because as I told you, the atmosphere of the South Pole is not good, okay? During daytime and night time minus temperature will be there, and this temperature is not suitable for our body, so it is little bit risky. So the writer is saying that it's easy to be blase about polar ice caps melting when sitting in the comfort zone of our respective latitudes and longitudes, but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of the global warming is very real. The writer is saying, if it is possible, actually this project is impossible only because the atmosphere of the climate of the South Pole is not good. But suppose we have taken the students towards it, and we have seated on the latitude and longitudes, and we are visibly retreating monsoon, or parallelly the ice sheets are collapsing, at that time the threat of Earth's end comes in our mind. जब हम लोग वहाँ पे बैठते हैं और वो बड़े बड़े आइस शीट जब कोलैप्स होते हैं, आइसबर्ग, उनको देख के हमें लगता है कि हमारी अर्थ का एंड बहुत ही पास में है, यानी ये जो थ्रेट है वो हमारे मन में आता है। Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Repercussions means possibilities. Here, what is the? Yes, repercussions, possibilities, effects. So the writer is saying that if you want to study the Antarctica, because its ecosystem is very simple. Why? Because no biodiversity is there. Biodiversity where we are living. Okay. So such biodiversity, the biodiversity is lack of here. Then perfect place to study the little changes. तुमको पता है, मैंने तुमको पहले ही बोला, first that is वो चेन होती है ना, फर्स्ट चेन, सेकंड चेन, that is producer and independent, जो भी होते हैं साइंस का टॉपिक एक्चुअली। तो ये जो एक चेंज अगर एक स्टेप में होता है, ये उनकी जो फर्स्ट चेन में भी चेंज होता है, तो उसके ऊपर आगे का पूरा जनरेशन जो है वो कोलैप्स हो जाता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है, देखो। द राइटर इज सेइंग, टेक अ माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक प्लांट है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। ये जो प्लांट है वो ओशन के अंदर रहती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रास, और वो प्लांट के ऊपर
वो फूड के तौर पे फाइटोप्लैंक्टन का यूज करते हैं. इफ सपोज these single celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of process called photosynthesis. वो प्लांट क्या करती है? एक्सचेंजिंग ऑफ द गैसेस, CO2 लेना और ऑक्सीजन भेजना, एंड बिकॉज ऑफ दिस द प्लांट इज फॉलोइंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और एक्सचेंजिंग ऑफ द गैसेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लिविंग बीइंग. हमारे लिए जैसे प्लांट को इसलिए प्रोड्यूसर कहा जाता है, फर्स्ट चेन है ना, देन हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस कम्स. सो ये जो चेन है ये किसकी वजह से है? द प्लांट फाइटोप्लैंक्टन. एक्चुअली इट इज अ माइक्रोस्कोपिक प्लांट, बट द होल creatures of the ocean are living, means they are using it as a food. So scientists warn that, अभी scientists ने क्या warning दिए देखो. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of the phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region. Scientists ने यहाँ पे हमें एक warn किया है, warning दी है कि if our further activities may harm the ozone layer, then because of our bad impacts or our activities, the phytoplankton activities stopped, which turn to affect the lives of the all water animals parallelly birds of this region. क्योंकि अगर फाइटोप्लैंक्टन चली गई तो जैसे तुम लोग ले लो पेंगुइन है या जो भी दूसरे बर्ड्स है वो फिश के ऊपर रहते हैं. फाइटोप्लैंक्टन को फिश भी खाती है. ओके, तो फ्लाइटोप्लैंक्टन को वो खाते हैं तो उनके अंदर जो प्रोटीन है वो एनिमल्स के अंदर आता है. अगर फ्लाइटोप्लैंक्टन ही चली गई तो फिश भी नहीं रहेंगे, फिश नहीं रहेंगे तो बर्ड्स मर जाएंगे, एनिमल्स मर जाएंगे. यानी एक चेन अगर टूटती है तो पीछे की पूरी चेन टूट जाएगी. ऐसा एक साइंटिस्ट ने हम लोगों को वार्न किया है. आगे वो बोल रहे हैं देखो, द ग्लोबल कार्बन साइकिल in the parable of the phytoplankton there is great metaphor for existence. Take care of the small things, the big things will fall into place. इसलिए उसने बोला है it is a metaphor, इंग्लिश का है, फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर. कंपेयर किया है कि हम लोग छोटी चीजों को अगर बहुत ध्यान से संभाल के रखते हैं तो उसके ऊपर बड़ी चीजें को हार्म होता नहीं. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारा ही एग्जाम्पल ले लो. सपोज तुम लोगों ने प्री प्राइमरी क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में ध्यान नहीं दिया तो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में तुम लोग कितना भी पढ़ लो तुमको समझ में आएगा नहीं. वाई? इसलिए तुमको टीचर अगर बोलती योर बेस, योर फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर. तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है, तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो तुम लोग आगे कैसे पढ़ोगे? तो यहाँ पे सेम थिंग दी हुई है कि इफ वी टेक केयर अबाउट द स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग्स ऑटोमेटिकली विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. वेरी नाइस सेंटेंस, इजंट इट? कि अगर हम लोग स्मॉल चीज़ों की ध्यान रखना शुरू करते हैं तो उसके ऊपर बड़े चीज़ें जो हम लोग डिपेंड होते हैं वो चीज़ें अपने आप काम करती है अगर स्मॉल चीज़ें की ध्यान रखी जाए तो. ओके, नाउ लास्ट टॉपिक, वॉक ऑन द ओशन. इट इज अ एक्सपीरियंस नरेटेड बाय द ऑथर हरसेल्फ कि ओशन के ऊपर चलना कितना मजा आएगा. अभी ओशन के ऊपर चलना है कैसे, तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर. My Antarctic experience was full of such epiphanies, and the base occurred just short of Antarctic Circle at 65.55 degrees south. The Chocolate Sky had managed to wedge herself into the thick white stretch of ice between the peninsula and the Tadpole Island, which was preventing us from going any further. The captain decided we were going to turn around and head back north. But before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. Very nice experience. The author is saying that when we reached to means the moment of epiphanies means the moment of understanding. It is a stage that where we are getting the understanding about the particular concept. So whenever they started their journey through the Chocolate Sky and they turned towards Antarctic circle at 65 to 55 degree. The writer is saying that it was a place situated covered with ice. It is a thick ice, and the Chocolate Sky used to manage to cut the ice, or we can say here it is saying that managed to wedge. Wedge means cut the ice, and the ship was moving ahead. In between, the captain has made some, we can say that good message to the voyagers, and the captain said that you can walk on this space. So वो सारे जो है वो शिप में से उतर के किसके ऊपर चल रहे हैं? ओशन के ऊपर.
क्योंकि कितना मजा आएगा, नीचे पानी दिख रहा है हम लोगों को, ऊपर तो आइस का लेयर रहती, हम लोग उसके ऊपर चल रहे हैं, नीचे फिश दिख रही है उसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। वेरी नाइस एक्सपीरियंस, जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग ऐसा चलेंगे तो उतना मजा आएगा। तो इसीलिए राइटर ने यहाँ पे बोला कि वॉक ऑन द ओशन इज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर अस, क्योंकि हम लोग बर्फ, वो जो आइस था वो इतना ट्रांसपेरेंट था कि हम लोग चल रहे थे और हमें नीचे का दिख रहा है। सो नाइस। तो यहाँ पे राइटर ने बोला है कि अब तक का जितना भी मेरा अंटार्कटिका का व्यू रहा और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, द बेस्ट एक्सपीरियंस इज ओनली वॉक ऑन द ओशन। एंड हियर सो देयर वर ऑल 52 ऑफ अस। कितने लोग थे टोटल? साइंस वाले खास याद रखना, अगर एमसीक्यू पेपर स्टाइल हो तो ऑल ऑफ 52 दे वर kitted out in vortex and glares, walking on the stark whiteness that seemed to spread out forever. And underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water. In the periphery, crepitus seals were stretching and sunning themselves on the ice floes, much like stray dogs will do under the shade of the banyan tree. It was nothing short of revelation. Everything does indeed connect. राइटर ने वहां पे लिखा कि वो जो आइस था, मैं यहाँ पे हिंदी में बोलूंगी, देखो, द राइटर हैड सीन, वो आइस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। ओके, सील जो थे कई जगह पे बैठे हुए थे, जैसे तुम लोग देखते हो बनियान ट्री के नीचे स्ट्रे डॉग्स बैठे होते हैं। ओके, तो वो जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वहां पे वो किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, कान खुजलेंगे, ये वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सेम एक्टिविटीज वर डन बाय वो सील जो है, वो ऐसे एक्टिविटीज कर रहे थे। उसको देख के द राइटर इज सेइंग इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ रिविलेशन। रिविलेशन मीन्स इट वाज द आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। हम लोग जो जितने 52 के 52 थे, वो ह्यूज मास ऑफ आइस का था, उसके ऊपर हम लोग दौड़ रहे थे। एक्चुअली इट वाज नॉट द आइस, इट वाज द ओशन। वो आइस नहीं था, वो तो उसका ठीक एक कवर था, और सब जगह पे वो व्हाइट आइस फैला हुआ है और हम लोग उसके ऊपर दौड़ रहे हैं। कहीं भी बीच वो जो सील है वो भी हमको दिखाई दे रहे हैं, एंड वो एक्सपीरियंस कितना मस्त था। तो राइटर ने बोला कि इट वाज सच आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। 9 टाइम जोन्स, अभी देखो राइटर यहाँ पे बोल रहा है शी क्रॉस्ड या दे क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, many ecosphere later, I was still wondering about the beauty of the balance in a play on our planet. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? Will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? Who is to say? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that lot can happen in million years, but what a difference a day makes. राइटर ने लास्ट में बहुत अच्छा बोला है कि उन्होंने 9 टाइम जोन्स, अभी टाइम जोन देखो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ और कोई तुम लोग सपोज वो साइड में है, सिर्फ बीच में हम लोग देख रहे हैं। मैं बोलूँगी यहाँ पे मंडे दिख रहा है, तुम लोग मैम मुझे संडे दिख रहा है, कितना मजा आएगा, है कि नहीं? तो वो राइटर यहाँ पे बोल रहे कि हम लोगों ने ऐसे 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर हमने क्रॉस की, और वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। राइटर ने बोला कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो भी चेंजेस हुए, जो डायनासोर्स जो था उनका घेरा था वो चला गया, फिर मैमोथ्स आए उनका भी चला गया, फिर वूली राइनोस थे वो भी चले गए, अभी कौन है? मैमल्स है। तो राइटर बोल रहे हैं कि मिलियंस में अगर इतने चेंज होते हैं, बट द 2 weeks we have spent over the Antarctica continent, it made a lot of difference because the writer herself was an adult and she was with the teenagers like you. सबको मैनेज करो, जैसे इमेजिन करो मैं और तुम लोग जा रहे हो, कितना मजा आएगा, because you all are the future citizens, you have to take the decisions, you have to make the decisions all about it. तो तुम लोग जो डिसीजंस लोगे वो तुम्हारे फायदे के लिए होंगे। तो राइटर ने यहाँ पे बोला हुआ है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो भी डिफरेंस होता है, बट व्हाट अ डिफरेंस डे मेक्स, डे में क्या डिफरेंस होता है, बट अगर हम लोग सोचे तो हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। वेरी नाइस चैप्टर। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अभी इसके अंदर तुम लोगों को 4 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, और उन्होंने ऐसा बोला है कि दोज हु आर द क्यूरियस स्टूडेंट, जो क्यूरियस स्टूडेंट है उनको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्होंने एक साइट दी है तुम लोगों को, वो साइट का नाम है www.studentsonis.com। यहाँ पे तुमको अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए तो तुम लोग ये साइट पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। रीडिंग द इनसाइट, इसमें 4 क्वेश्चन
समझ में आया होगा। और कभी अगर होगा तो अपने स्कूल वालों को बोलते हैं कि हमारी जो पिकनिक है वो कहाँ पे निकालो, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, फिर हम भी ओशन पे चलेंगे और जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। ओके बेटा, विद दिस बाय गाइस।